Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Namra and today I will teach you branches of philosophy. Let's start with the basic definitions. According to Plato, philosophy aims at knowledge of external nature of things. According to Fichte, philosophy is the science of knowledge. Philosophy is the mother of all sciences. Philosophy is an activity of thought. It is a particular unique type of thought or style of thinking. There are various perspectives of philosophy. There are three main branches of philosophy: metaphysics, epistemology and axiology. The other name of metaphysics is ontology, which deals the reality. Epistemology deals the knowledge. Axiology deals the nature of values. Metaphysics deals with the nature of reality. What is reality? What is the soul? There are subdivision of metaphysics. Theology, the existence of God. Ontology deals with the ultimate reality. Cosmology is the study of problems connected with origin and imposition. Cosmology, it is the theory concerning the origin and development of the universe, the creation of the world. Philosophy of self. Eschatology, last or final matters, death and life after death. Epistemology deals with the theory of problems and knowledge. Questions such as how do we get the knowledge, what is the source of knowledge, method of knowledge, limits of knowledge and validity of knowledge, what is the authenticity of knowledge. Basically it deals the knowledge. Axiology, higher value of life, and it's the third branch of philosophy. It deals the principles of life, truth, beauty and goodness. There are subcategories of axiology: logic, ethics and aesthetics. Logic deals the techniques of reasoning. Ethics deals the moral philosophy. Aesthetic deals beauty and analysis, like beauty and ugliness, what is beauty. Ethics deals the right and wrong concept. Metaphysics is a domain of philosophy that deals with the question what is real. One aspect of his theory is reality is to understand the character of the physical universe. The branch of physics as to the organization and orderly arrangement of the various parts of the universe. Other considerations include in cosmology are the nature of time and space and factors of causality. Like टाइम एंड स्पेस में हम बाउंड है पूरी दुनिया, ठीक है. तो अब मेटाफिजिक्स जो है ये अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस के हवाले से क्वेश्चन करती है कि कोई बहुत से स्कूल ऑफ थॉट ऐसे हैं जो कि बिलीव करते हैं कि कोई ऐसी हस्ती है जो सारी कायनात के निज़ाम को चला रही है, इतनी ऑर्गेनाइज वे में दुनिया का निज़ाम चल रहा है. तो इट इज़ डेफिनेटली अ सुपर पावर एग्जिस्ट करती है, ठीक है. और बहुत से ऐसे स्कूल ऑफ थॉट है जो कि अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं और उसको डिनाई करते हैं, और दे सेट के ऑटोमेटिकली ये साइंस को वो एविडेंस और अपनी आर्गूमेंट्स पेश करती हैं इसके लिए, थ्योरी ऑफ रियलिटी एंड नॉलेज के लिए, एग्जिस्टेंस के हवाले से. तो गॉड की एग्जिस्टेंस क्या है, यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, इस सबको डील जो है वो मेटाफिजिक्स करती है. इसमें टाइम एंड स्पेस का क्या कॉन्सेप्ट है, काइंड ऑफ टाइम क्या है, और हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए, पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है, हमारे सोल, नेचर, रियलिटी, ट्रूथ, इन सब चीज़ों को मेटाफिजिक्स जो है वो डील करती है. रियलिटी को, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, ठीक है. What is metaphysics? Metaphysics is the branch of philosophy responsible for the study of existence. It is the foundation of worldview. It answers the question what is, and it encompasses everything that exists. Why metaphysics is important? Because it is the foundation of philosophy. Without an explanation or an interpretation of the world around us, we would be helpless to deal with the reality. And what is the key element of rational metaphysics? Reality is absolute. It has specific nature, and the world around us is real, and the specific nature of human being and consistency of the nature and the metaphysical worldview of the things to understand the reality accurately. Metaphysics has following parts: theology, ontology, cosmology, cosmology and eschatology, which deals the subdivision of the existence of God, ultimate reality, existence of universe, humanity and the life after death. Islamic perspective of metaphysics of Islam. This universe has been created by Allah. Physical universe is destroyable yet real. Spiritual universe is everlasting. Allah is shapeless and the souls are created by Him. Human is the supreme creation by Allah. The human development depends on the power of his soul, his deeds and Allah's mercy. A human's ultimate object is to prepare himself for the everlasting life and unity his soul with Allah. Islam doesn't believe in rebirth. It is an Islamic perspective of metaphysics. As being Muslim, it's our faith. We are created by Allah Barik Ta'ala,
और ही इज़ द क्रिएचर ऑफ द यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स। और फिज़िकल यूनिवर्स जो है ये क्या है कि मॉर्टल है, फ़ानी है, इस दुनिया ने तबाह हो जाना है, डिस्ट्रॉयबल है। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो हैं वो अल्टीमेट रहने वाली हैं, एवरलास्टिंग है, हमारी रूह जो है वो फ़ानी है। इसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करते हैं और हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव को इस्लामिक नुक्ता नज़र से देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजना है, उसका पर्पस क्या है, हमें पर्पसफुल लाइफ किस तरह से गुजारनी है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है और एवरलास्टिंग ट्रूथ कौन से हैं। ठीक है, ये सब हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को फ़िलोसॉफिकल एंगल से हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेटाफिजिक्स में कौन से क्वेश्चन रेज होते हैं। मेटाफिजिक्स इज अ फील्ड ऑफ फिलोसफी दैट इज जनरली फोकस्ड ऑन हाउ रियलिटी एंड द यूनिवर्स बिगिन। क्वेश्चंस इन मेटाफिजिक्स आर व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिवर्स वी लिव इन, व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ सोल एंड व्हाट इज़ गॉड। ठीक है, गॉड के कॉन्सेप्ट पे, रियलिटी पे, सोल पे, हमें इस ज़िंदगी में किस तरह से गुजारनी है, इस कायनात में इसका खालिक कौन है, इसको बनाने का मकसद क्या है, हमें ज़िंदगी का नुक्ता नज़रिया हयात और फ़लसफ़े को समझने के लिए हम मेटाफिजिक्स को स्टडी करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। Second branch of philosophy is the epistemology, which deals with the questions of knowledge. One aspect of knowledge is possibility or impossibility of it, what is possible and what is impossible. A second aspect of knowing experience is the instrument of source of knowledge. कि इंसान अपने experience के बेस से बहुत चीज़ें सीखता है, अपनी rational thinking पे, intellectual abilities पे और अपनी कोग्निटिव एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करके वो सीखता है अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज रिलेट्स टू डायरेक्टनेस ऑफ इनडायरेक्टनेस इन द नोइंग प्रोसेस। अब नॉलेज की कौन सी सोर्स हैं हमारे लिए, बीइंग मुस्लिम रिवील्ड नॉलेज है, ऑथेंटिक नॉलेज कौन सा है, कुरान पाक का नॉलेज है। तो ये इस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज है जो कि इसमें फर्दर स्टडी की जाती हैं। व्हाट इज़ एपिस्टेमोलॉजी? एपिस्टेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैथड ऑफ एक्वायरिंग knowledge. It answers the questions how do we know. It encompasses the nature of concepts, the constructing of concept, the validity of the sense, logic, reasoning, as well as thoughts, ideas, memories, emotions, and all things mentioned. Why it is important? Because it requires, in order to be able to determine the true form of the false, but determining a proper method of evaluation, it is needed in order to use and obtain knowledge. What is the key elements of proper epistemology? Our senses are valid and the only way to gain information about the world. Reason is our method of gaining knowledge and acquiring understanding. Logic is our method of maintaining consistency within our set of knowledge. So objectivity is our means of associating knowledge with the reality to determine its validity. Concepts are abstract of specific details of reality or of other abstractions. A proper epistemology is a rational epistemology. अब ये डील करती है नॉलेज को। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे नॉलेज की कितनी काइंड्स हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारी मेमोरीज, हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस की बेस पे लर्निंग, ये सब जो है इसका पार्ट है एपिस्टेमोलॉजी का। Epistemology is the second branch of philosophy. It deals with the theory of problems or questions such as what is knowledge, how do we get the knowledge, how does a man know what is real, what are the sources of knowledge. ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें उठाया जाता है वो होता है कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज कौन से हैं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव को हम देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी में। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इस्लाम, एट प्रेजेंट पीपल फॉलोइंग इस्लाम कंसिडर कुरान एज द प्राइम सोर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉलेज. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam divided knowledge into two forms, physical and spiritual. He has put physical products and social life under physical knowledge. Knowledge of Islam religion under spiritual knowledge. ठीक है, अब वो उनकी रूहानियत और उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस दोनों को वो कहते हैं हमारे लिए उसवा हसना है। दोनों काइंड्स को हम जो है वो फॉलो करते हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमारे सामने एक सेट क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड है जिसको हमने फॉलो करना है। उसवा हसना उनकी अमली ज़िंदगी जो प्रैक्टिकल लाइफ है आप सल्लम की। इसके अलावा कुरान जो है वो ऑथेंटिक है, वैलिड होने में कोई शुबा नहीं है और हम उसको एज अ ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज हम उसको कंसिडर करते हैं। In Quran there are three ways mentioned to attain physical knowledge. Ilmul yaqeen, ainul yaqeen और हकूकुल यकीन. Believe by estimating, believe by seeing, believe by touching. ये three kinds आपको बताएगी knowledge की. This clearly means sense are considered as a medium to attain physical knowledge. Where attaining spiritual knowledge is concerned, Islam considered information given by the Prophet. The third branch of philosophy is axiology, the theory of values.
There are, of course, different types of values or different theories of values, yet these receiving attention from philosophers are the ethical, aesthetics, religious and social values. Other values are the intellectual, economic, political, educational, recreational and health values. अब वैल्यूज में सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो फिलोसफी जिसको डील करती है वो लॉजिक्स को डील करती है, एथिकल नॉर्म्स को डील करती है, एस्थेटिक्स को. और कौन सी वैल्यूज हमारी सोशली एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इन सबको एक्सोलॉजी जो है वो डील करती है. एथिकल वैल्यूज़ में सबसे पहले क्या आ जाता है, द स्टडी ऑफ लॉज और स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग मॉरल बिलीव्स एंड कंडक्ट. ठीक है कि वो राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट आ जाता है. एस्थेटिक्स में क्राइटेरिया ऑफ ब्यूटी, इंजॉय थिंग्स ऑफ ब्यूटी विदाउट नोइंग व्हाट ब्यूटी इज़. मतलब हर इंसान का देखने का नुक्ता नज़र डिफरेंट होता है, हर इंसान के लिए ब्यूटी का क्राइटेरिया कुछ होता है, हम हुस्न जमालियात कहते हैं. ठीक है कि एक इंसान के लिए कुछ अट्रैक्टिव चीज़ कुछ और हो सकती है, क्राइटेरिया खूबसूरती का कुछ और होता है, आपको कोई अच्छी नेचर अपील कर सकती है, किसी को कलर्स अपील कर सकते हैं. ठीक है तो हर एक के लिए इंजॉयमेंट के जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकती हैं. रिलीजियस वैल्यूज़ में रिलीजियस वैल्यूज़ आर लाइकली टू बी रिलीजियस कन्वर्सेशन. Exology is the third branch of philosophy which studies values philosophically. Questions of exology as what are the higher values of life, what are the principles of life, what are the importance of developing values, what is truth, goodness and beauty of life. Islamic perspective of life, exology को हम डिस्कस करें तो exology of Islam, Quran and Islamic law, Sharia, डिज़ायरेबल एक्ट्स अंडर अनडिज़ायरेबल एक्ट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है कहते हैं कि शरीयत के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कौन सी चीज़ें हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन सी चीज़ें जो है हमारे लिए ममनू हैं. हलाल एंड हराम, द कॉन्सेप्ट ऑफ हलाल एंड हराम, लॉफुल एंड अनलॉफुल. फर्ड ऑब्लिगेटरी, एन एक्ट कमांडेड बाय अल्लाह इन द होली कुरान इज़ नोन एज फर्ड. यानी फ़राइज़ हमारे कौन से हैं जिनको हमने अदा करना हमारे लिए जो है वो लाज़िम मलज़ूम है, वो भी अल्लाह ताला ने हमें कुरान के ज़रिए बताए हैं. सुन्ना, इसमें सुन्नत में भी दो तरह की वो कहने के सुन्नत जो है उसकी भी दो काइंड हैं, टू काइंड्स को में डिवाइड करते हैं इसको, सुन्नत मोकदा और सुन्नत गैर मोकदा. मोकदा में क्या है कि एन एक्ट डन और लाइक बाय द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रिलेशन टू वर्शिप. सुन्नत गैर मोकदा, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैड परफॉर्म सच एन एक्ट बट ऑल्सो ओमिटेड इन विदाउट एनी रीज़न. ठीक है गैर मोकदा में ये है कि अगर आप वो अदा नहीं करते तो आपको गुनाह नहीं है, बल्कि मोकदा जो है वो जायज़ है करना. और सुन्नत नबी से भी जो है वो उसको आपको रहनुमाई हासिल होती है कि किस इबादत में भी हम मोकदा गैर मोकदा का ख्याल कर रखते हैं. ठीक है. लॉजिक, द टर्म लॉजिक केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस विच इज़ समटाइम्स ट्रांसलेटेड एज सेंटेंस, डिस्कोर्स, रीज़न, रूल एंड रेशो. Of course, these translations are not enough to help and understand the more specialization meaning of logic as it is used today. Logic as a study of the principles of correct reasoning. It is a rough definition because how logic should be properly defined is accurately quite a conversational matter. However, for the purpose of this tour, we thought it would be useful to give you at least some rough ideas about the concept of logics, the subject matter that you will study. अब कह रहे हैं कि लॉजिक क्या है, बेसिकली मंतक होती है या कोई आइडिया होता है या कोई वो कह रहे हैं कि आप इसको कोई समझ सकते हैं कि क्या हम इसको लॉजिक क्या है. लॉजिक इज़ अ प्रोसेस फॉर मेकिंग अ कंक्लूजन एंड अ टूल यू कैन यूज़. द फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल आर्गूमेंट, यानी अपने आर्गूमेंट से दलाइल से किसी चीज़ को कन्वे करने की, मंतक को, अपने नुक्ता नज़र को समझाने की कोशिश करते हैं. इट्स प्रपोजिशन और स्टेटमेंट. द प्रपोजिशन इज़ इधर एक्यूरेट और नॉट एक्यूरेट. वो आपकी जो स्टेटमेंट है वो सच पे मबनी भी हो सकती है और मफरूज़ा भी हो सकता है या झूठ पे भी मबनी हो सकती है. प्रीमिसेस आर द propositions used to build the argument. The argument is then built on premises. Then an inference is made from the premises. Finally conclusion is drawn. तो अपनी आर्गूमेंट की बेस पे आप अपने नुक्ता नज़र समझाने की कोशिश करते हैं और फिर उससे आपको नतीजा फस करते हैं और फिर आप फाइनल डिसीजंस पे आते हैं. इसमें दो तरह की रीजनिंग है, डिडक्टिव है और इंडक्टिव है. डिडक्टिव कौन सी होती है, जिसमें जनरल चीज़ों से आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाते हैं, यानी फ्रॉम जनरल टू कॉम्प्लेक्स फिनोमिना. Deductive reasoning provides complete evidence of the truth of its conclusion. It uses a specific and accurate premises that leads to a specific and accurate conclusion with correct premises. The conclusions to this type of argument is verifiable and correct. Premises: all squares are rectangle. For example, all squares have four sides. Conclusion: all squares have four sides. Premises: all people are mortal and you are a person, so you are a mortal. So there is a different example.
Inductive reasoning is bottom up, meaning that it takes specific information and makes a broad generalization that is considered probable, allowing for the fact that the conclusion may not be accurate. This type of reasoning usually involves a rule being established based on a series of repeated experiences. इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स फिनोमेना की तरफ जाते हैं, आसान से हम मुश्किल की तरफ जाते हैं, और हाई लेवल पे यूजुअली हम इंडक्टिव रीजनिंग जो है यूज़ करते हैं, और एलिमेंट्री लेवल पे हम डिडक्टिव रीजनिंग को अप्लाई करते हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ जाते हो, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हो, फिर उसको जनरलाइज करते हो और उसके लिए अपनी लॉजिक्स रीजनिंग्स आप जो है वो पेश करते हैं. देयर इज़ अ फ्लो चार्ट ऑफ फिलोसफी, आप एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, लॉजिक्स और वैल्यूज़ का आप रिलेशन चेक कर सकते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी डील करती है नॉलेज को, ट्रूथ नॉलेज को, ऑथेंटिक नॉलेज को, वेरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग. मेटाफिजिक्स डील द एग्जिस्टेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द who is the creator of this universe, what is the purpose of life. Ontology deal the ultimate reality, the concept of time and space, and conceptual conscience. And logic deal the sound reasoning. It is also included deductive, inductive, the foundation of mathematics, proofs, evidence, sets, formulas, etc. Value theory, what is good, what should be ethically acceptable, socially acceptable, religiously acceptable, what are the norms, what are the aesthetics, what is the social and political theories, the concept of right and wrong. What is ethics? Ethics is a branch of study deal with the what is the proper course of action for man. It answers the questions what do I do, it is studies right or wrong in human endeavor. Why ethics is important? Because it is our means of deciding a course of action. Without it, our actions would be random and aimless. What are the key elements of proper ethics? Proper foundation of ethics requires standard of values which all goals and action can be compared to. These standards is our lives and the happiness which makes them livable. ठीक है. एथिक्स में जैसे मैंने वो कहा है कि मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग क्या है, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगियाँ किस तरह से गुजारनी है, हमारे लिए कौन सी नॉर्म्स, कौन सी एथिकल नॉर्म्स एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी एक्सेप्टेबल नहीं हैं, सोशली भी, रिलीजियसली भी, और राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट. एथिकल क्वेश्चंस, इट इज़ एन एक्शन moral or immoral. What are the human rights and how do we determine them? Do individuals have the right of self-determination? These are the questions raised in ethics. Aesthetics basically deal with the beauty and art. It includes what the arts consist of as well as the purpose behind it. Does art consist of music, literature and painting? Why it is important? Because through the art and aesthetic sense, all of recorded human history, it is a unique of human because of our unique form of thinking. It is important and it because it's based on its nature, specifically man's ability to abstract. यानी हम abstract जो हम assume करते हैं चीज़ों को, ख्याली दुनिया होती है, तो उसको ये डील करती है, आर्ट्स को, ब्यूटी को, थिंकिंग को. What are the key elements? Art is a selective reaction, recreation of reality. Its purpose is to concentrate or the abstraction to bring an idea or emotion within the grasp of the observation or observer definitely. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये आर्ट जो है, लाइक आप किसी चीज़ को इमेजिन करते हो और आप आर्ट बनाते हो, उसको आप समटाइम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो, रियलिटी को आप उसमें डिपिक्ट कर रहे होते हो, कोई ना कोई आप मैसेज देना चाह रहे होते हो, कोई इमोशन एक्सप्रेस कर रहे होते हो. तो बेसिकली एस्थेटिक जो है वो ब्यूटी को, इमोशंस को, आर्ट को, इसको डील करती है. ठीक है. दीज वैल्यूज जजमेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड इवैल्यूएटेड बाय द फील्ड ऑफ एथिक्स. Ethical questions, aesthetics questions, what is art? Do the simple express individual or cultural taste? How do arts relate to spirituality and religion? Is there a connection between morality and art? How do arts communicate emotions? How central is emotional communication to the nature of art? There is a hierarchy relationship between metaphysics, epistemology, ethics, politics and aesthetics. Metaphysics deals existence and whatsoever there, कि हमारी दुनिया में का मकसद क्या है, दुनिया को बनाने वाला कौन है, कायनात को
क्रिएट करने वाला, तख्लीक करने वाला कौन है, और हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी, ये सब हमें फिर मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी जो इसको डील करती है। एपिस्टेमोलॉजी डील करती है सोर्स ऑफ नॉलेज को, स्टडी ऑफ नॉलेज के ऑथेंटिसिटी कौन सी है, टाइप्स ऑफ नॉलेज कौन से हैं, ट्रूथ नॉलेज कौन सा है, जिससे मैंने आपको बताया कि रिवील नॉलेज है हमारे लिए, और रिवील नॉलेज है जो आप अम्बिया पर वही के नज़रिए नाजिल हुआ, और ट्रूथ बेस्ड नॉलेज है हमारे पास कुरान पाक और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु हमारे पास अमली ज़िंदगी गुजारने के लिए नॉलेज है, अहादीस हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी सबको डील करती है। हाउ डू आई नो अबाउट इट, तो हमें किन सोर्सेज से पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि नॉलेज कौन सा ट्रूथ है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है, सब जो है एपिस्टेमोलॉजी डील करती है। एथिक्स जो है स्टडी ऑफ एक्शन है, व्हाट शुड वी आई डू, कि हमें किस तरह से हमें ज़िंदगी किस तरह से, हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, हमारी नॉर्म्स क्या हैं, हमारी एथिकल नॉर्म्स क्या हैं, हमारे राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सी चीज़ें सोशली एक्सेप्टेबल हैं, इस्लामिकल जैसे हमने शरीयत की बात की, कौन सी चीज़ें हम पे जो है वो जायज़ हैं, हलाल और हराम हैं, तो सब चीज़ें जो है एथिक्स इसको डील करता है। पॉलिटिक्स में है स्टडी ऑफ फोर्स, व्हाट एक्शंस आर permissible, aesthetic study of arts, what is the criteria of beauty, what can life be like. Thank you so much, hope so you can understand today's lecture. Allah Hafiz.